Okay. So our new unit is time share and vacation ownership. So this is first semester unit. So we are just going to have an introduction of time share and vacation ownership, as it will come back when you will be in sixth semester. So sixth semester, it would be in detail time share and vacation ownership. So today we would try to know what time share means, what do you mean by condominiums, what do you mean by referral chains. So our objective is to understand these topics at least up to the 90% accuracy of the set standards. So first question, what are condominiums? So let me tell you first, this time share property or condominiums, they are different from the generic hotel which we have studied. We have studied about standard hotels, so they are different from that. So how they are different, that we will come to know. So condominium hotels are similar to timeshare hotels. The question arises, timeshare hotels. What are timeshare hotels? You don't know about timeshare hotels. तो अभी यहाँ पर ये रहने देते हैं. Except that condominium hotels have a single owner, whereas this timeshare are having a multiple owner sharing the hotel. So what is there? Condominiums are having single owners. तो आपको लगेगा कि जो एक 5 स्टार होटल होता है या 5 स्टार डिलक्स होटल होता है, वो भी तो सिंगल ओनर हो सकता है अगर वो चेन नहीं है तो. हाँ, ये किस तरह से डिफरेंट है ये समझने की कोशिश करो. In a condominium hotel, the owner informs the management company when they would occupy that particular property. So you might have heard, I think we were discussing about, Burj Al Khalifa, and we are talking about the apartment holds by the celebrities of Bollywood, isn't it? So those apartment hotels, these condominiums are also called as apartment hotels or apart hotels. Okay. So in this, what happens? The owner purchase the apartment. However, if I am talking about the whole building, it is being managed by some management company. So say for example, Hotel ABC. So Hotel ABC is managed by Hotel ABC, and then there is Tej Pratap Singh, there is Ranveer Kundra, there is Intikhab, Rudra, there are numerous fellow who has purchased a particular apartment or particular room of that particular hotel. ठीक है यहाँ तक? That particular room, that particular apartment belongs to you. However, it is managed by Hotel ABC. It is managed by Hotel ABC. Now, Tej Pratap has said that I am going to come in my apartment in the month of February 2021. He will go over there and he will occupy, he will stay, he will avail all the facilities in the hotel, and then he will leave. However, it's his own property, so he can come any time and he can occupy it. He has to inform the management in advance. Why so? The management is having a liberty to rent out that particular apartment of Tej Pratap if Tej Pratap is not there. Of course, with the consent of तेज प्रताप. ऐसा नहीं कि तेज प्रताप को बताए बगैर वो ऑक्यूपाई करवाते हैं. ठीक है, तो तेज प्रताप जो है वो फरवरी में आकर स्टे करता है और उसके बाद वो पूरे साल भर नहीं आने वाला है. तो मार्च के महीने में गोपाल मिश्रा को हम दे देते हैं, अप्रैल के महीने में रुद्रांश शर्मा को दे देते हैं और वो आकर उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, अब बट ऑब्वियस देयर वुड बी अर्निंग, पैसा कमाया जा रहा है. दैट अर्निंग्स वुड गो टू तेज प्रताप. ठीक है, विद ऑनर, तेज प्रताप इज द ऑनर. ठीक है, क्वेश्चन अराइजेस कि सर मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के पास बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. फर्स्ट थिंग, they would be giving a laundry facility, they would be giving a F&B facilities. So those F&B facility, laundry facilities and other POS facilities which is being given by the management company, that is their earning. ठीक है, इसके अलावा ऑनर जो होता है यानी कि तेज प्रताप जो है वो हर एक महीने का एक मैनेजमेंट फी मैनेजमेंट कंपनी को देगा. वो मैनेजमेंट फी किस चीज के लिए रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, owners generally pay a monthly or annual maintenance fee to the management company that take care of the premises, including landscaping, cleaning of common areas, water and power supply, elevators, whatever it is. ठीक है, तो वो जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए तेज प्रताप जो है वो मैनेजमेंट फी पे करता है उस होटल एबीसी को. क्लियर?
दिस इज कॉन्डोमिनियम्स, ठीक है। तो कॉन्डोमिनियम्स में सिंगल ओनर हुआ, सिंगल ओनर हुआ, हु वाज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट, तेज प्रताप वाज द ओनर, ठीक है। So I think when we are discussing in the classroom, I have given an example to Gopal that have you heard about Taj Wellington Mew? So Taj Wellington Mew is in Colaba. It's a condominium. It's a condominium hotel which is operated by the management is of Taj. ठीक है. Now in that particular apartment, there are different apartments which is owned by different companies. जैसे उनका जो 12वां या 13वां माला है, जो 12th और 13th फ्लोर है, that is owned by Reliance. ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉन्डोमिनियम्स बोलते हैं। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम शेयर? ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टाइम शेयर। सो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, हाउ टाइम शेयर आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्डोमिनियम्स, क्योंकि अभी हमने जब कॉन्डोमिनियम्स पढ़ा उसमें एक ही डिफरेंस है कि कॉन्डोमिनियम्स आर हैविंग सिंगल ओनर, यहाँ पर तेज प्रताप ओनर था उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का। टाइम शेयर को हम क्या करते हैं? टाइम शेयर्स आर सोल्ड इन वीक्स, तो फ्रैक्शंस में बेचा जाता है, वीक्स में बेचा जाता है। तो हम बोलते हैं टाइम शेयर कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 52 ओनर्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रॉपर्टी, वन पर्टिकुलर विला, से फॉर एग्जांपल वो रुद्रांश शर्मा ने उस विला को लिया है, ठीक है। बट दैट रुद्रांश हैज परचेज्ड इट फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सो every year that particular villa belongs to Rudransh Sharma only for the first week of January, first week of January. अब वैसे 52 वीक हो गए, there would be multiple owners. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के लिए रुद्रांश शर्मा है, सेकंड वीक के लिए इंतखाब है, थर्ड वीक के लिए कोई और है, ऐसे करके। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम शेयर कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 52 ओनर्स, मैक्सिमम ऑफ, कम भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल दैट रुद्रांश शर्मा हैज परचेज्ड इट फॉर 2 वीक्स, ठीक है, he can purchase it for 3 weeks, तो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ ओनर्स विल डिक्रीज, ठीक है। हो सकता है कि हर एक लोगों ने 2-2 वीक के लिए लिया तो 26 ओनर हो गए। अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि टाइम शेयर में होता क्या है। टाइम शेयर आर वैकेशन, ठीक है, वैकेशन प्रॉपर्टीज। सो द प्रॉपर्टीज व्हिच आर लोकेटेड, I will give you an example, a very basic example which you must have heard, which you must have seen, called as Mahindra Club Resort. Have you heard, all of you? Mahindra Club Resort. तो Mahindra Club जो है, Mahindra Club Resort जितने भी हैं, they all are your टाइम शेयर, वो जितने हैं वो टाइम शेयर प्रॉपर्टीज है। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ टाइम शेयर का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम शेयर आल्सो व्हिच यू विल स्टडी इन कमिंग फ्यू स्लाइड्स, ठीक है। टाइम शेयर जो होता है उसमें हमारे पास सिंगल ओनर नहीं होता है, मल्टीपल ओनर होता है। सो कॉन्डोमिनियम और टाइम शेयर में क्या डिफरेंस आया? कॉन्डोमिनियम और टाइम शेयर में ये डिफरेंस आया कि कॉन्डोमिनियम्स के अंदर एक सिंगल ओनर है, which can the owner can come any time in the year and can occupy, किसी भी समय आ सकता है और वो ऑक्यूपाई कर सकता है, सिंगल ओनर, ठीक है। जबकि टाइम शेयर में मल्टीपल ओनर होता है और कुछ ना कुछ फिक्स ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल दैट आई हैव परचेज्ड इट टाइम शेयर फॉर अ सीजन, मैंने बोला कि मैं समर में लेता हूं, तो नाउ समर इज बीइंग अगेन डिफाइंड। ये समर जो है वो हमारा अप्रैल से शुरू होता है और जून के बीच में खत्म हो जाता है। तो आई कैन कम एंड आई कैन ऑक्यूपाई बिटवीन अप्रैल टू जून। और इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आप वॉकिंग गेस्ट के जैसा आएंगे एंड देन यू वुड बी एबल टू ऑक्यूपाई, यू कैन नॉट, यू हैव टू गेट इट इन अ एडवांस रिजर्वेशन वे ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपने एक वीक के लिए, मान लो समर के लिए आपने बुक किया, जस्ट एन एग्जांपल, सारांश ने एक वीक के लिए जो है समर में बुक कर रखा है कि वो प्रॉपर्टी उसका है। सेम प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नीरज एज वेल समर्स में,
Same property belongs to Abhishek as well. अब सारांश, अभिषेक और नीरज मान लो कि 1 मई से लेकर 7 मई तक तीनों के तीनों आना चाहते हैं, so that cannot be possible, feasible. ठीक है, so what we'll do, we'll ask in advance. Saransh is saying okay sir, I wanted to come on 1st to 7th, so okay 1st to 7th आना चाहते हैं, yes, the room are vacant, your villa is vacant. Now Abhishek is saying कि मैं भी 1st to 7th आना चाहता हूँ, I'm sorry sir, as you have taken a timeshare of a seasonal basis, so in that particular season the 1st to 7th slot is already booked, you can come after 7th. ठीक है. This is also known as vacation ownership or holiday ownership concept. This the concept is that for a set period, which may be 1 week or more each year, and for a number of years. So once you are purchasing this particular property, particular type of timeshare, so आप number of years के लिए purchase करते हैं, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आप 1 साल के लिए purchase करते हैं. ठीक है. Number of years, the person gets the right to enjoy a stay and other facilities and services in an apartment or any other type of lodging in tourist areas. It is like advance purchase of time in holiday accommodation. Purchaser has to pay a one-time capital sum. Of course, you are purchasing it for n number of years, and then an annual contribution towards the maintenance of the property has to be paid. Of course, the buyers can occupy the property for the appointed time or rent the unit. Of course, if you are not coming, then you can rent as well to someone else. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक मैनेजमेंट होता है जिसे हम मैनेज करने को बोलते हैं. ठीक है. Okay, so that is about timeshare. अब किसी को भी कोई डाउट है between timeshare and condominiums, you can ask me right now. Yes, Aditya. Sir, as you mentioned that the condominiums have one ownership and timeshare have multiple ownership. So for acquiring the property, for a timeshare property, for acquiring it, there has to be one ownership, right? Like someone must have bought it, then only any like a company. I got it. So say for example, Club Mahindra. ठीक है. Say for example, Club Mahindra. So Club Mahindra is the owner according to you. ठीक है. Now there are different types of timeshare as well. So say for example, Aditya wanted to have its own timeshare. Just an example. Now what has happened? Aditya was not having that much of money. So what Aditya has done? Aditya has taken all his friends of HM Rachi and then made a timeshare property. So that would be a deeded timeshare contract. Deeded timeshare. So you will have a deed. So Abhishek बोलेगा कि मैं नेतरहाट से रांची आऊंगा on this particular week every year. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये एक सिंगल ओनरशिप है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो that's why we are saying it multiple ownership. ठीक है, इसके लिए मल्टीपल ऑनरशिप हम बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो ऑनर है वही मैनेजमेंट संभाल रहा हो. ठीक है, जबकि आपके कॉन्डोमिनियम्स में ऐसा नहीं है. कॉन्डोमिनियम्स में इंडिविजुअल ऑनर है और वन ऑनर है और मैनेजमेंट जो है वो अलग चल रहा है. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द वेरिएशन. आई थिंक ये जो आपका कंफ्यूजन है दैट वुड बी क्लियर वंस वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ टाइमशेयर्स. ठीक है. Okay, anyone else? Shall we move forward? You can nod your head. Shall we move forward? Okay, so we are moving forward to different types of timeshare. Fixed timeshare. First is fixed timeshare. So Aditya Bajaj has purchased, just an example, for a property in Barambe for 52 years.
ठीक है. So he would have to give a capital sum of for 52 years. ठीक है, 52 साल के लिए उसे परचेज करके पैसे देने होंगे. Now he has blocked 1st January to 7th January. So each year 1st January to 7th January, that particular timeshare property, that particular villa belongs to him. प्रॉपर्टी कहने का मतलब बिल्कुल ये मत समझ लेना कि 82 विला का प्रॉपर्टी है तो ये पूरा का पूरा विला जो है 82 विला जो है वो आदित्य बजाज का है. आउट ऑफ दैट 82 विला 1 विला बिलोंग्स टू आदित्य. ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट है ये भी आपको समझना चाहिए. ठीक है, द बेनिफिट इज दैट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. आज एक लमसम अमाउंट आदित्य बजाज पे कर रहा है. हाउएवर जरा सोचो कि आज के 52 इयर्स के बाद ARR रूम रेट क्या होना चाहिए था उस पर्टिकुलर विला का, जो कि 52 years back Aditya Bajaj has purchased it at a penny amount. What do you mean? I will just give you an example of not a time share. I will just give you an example of a 5-star deluxe hotel. So अगर आप ताजमहल पैलेस एंड टावर्स की बात करेंगे तो 1903 में उसका रूम रेट 500 रुपए था. ठीक है, अब मान लो कि कोई 1903 में 200 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और बोला कि मैं अभी आपको इतना पैसे पे कर रहा हूं. ठीक है, 2021 में what is the value of $500? Getting my point? ठीक है, so this is the benefit of having a timeshare. ठीक है, so the first is fixed timeshare. So you have purchased for a particular, you have logged it for a particular week. Next is flexible. Next is flexible. So flexible is you are purchasing it for a particular season. ठीक है, now season is being divided into I'm talking about India, so we are dividing it timeshare into the seasons, summer seasons, winter seasons. However, if I'm talking internationally, so internationally it is being divided into peak season, soldier season, and off season. ठीक है, peak season, soldier season, off season. So, but obvious if say for example, Kevin wanted to purchase a particular timeshare property, he will see onto his budget as well. और अगर उसका बजट अलाउ करना है कि नहीं वो पीक सीजन में नहीं ऑफ सीजन में खरीदे तो he will purchase it in off season. He just wanted to enjoy that particular forest or the hilly area, or might be snow capped mountains, beaches or whatever it is. ठीक है, got the meaning? Got the meaning? ठीक है, हाँ, इसमें हमेशा ये याद रखना कि पर्टिकुलर वीक ना होकर नंबर ऑफ वीक्स रहेगा, तो यू हैव टू गेट अ एडवांस रिजर्वेशन फॉर दैट. ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीक सीजन ऑफ Shimla, so you cannot say ki we'll go into summers only. So that depends. You wanted to enjoy the winters, you wanted to enjoy the snowfall, so the peak season is of course winter. What the meaning? You are saying ki I'm going to Goa, so Goa cannot have a peak season in summers. Come on, everyone wanted to enjoy the December end or the carnival festival. Clear, flexible. Moving forward to the third one, that is rotational. So rotational is if you have blocked this year 2021 from 1st to 7th of January, so next year 2023 it would be from 8th of January to 15th of January. ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो है वो 52 years के लिए खरीदता है, 52 years के लिए परचेज करता है, so he would be able to occupy from 1st of January till 31st of December in those 52 years. हर एक साल एक वीक वो आगे चला जाएगा. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रोटेशनल टाइमशेयर बोलते हैं. ठीक है, चलिए मूव फॉरवर्ड.
Okay, moving forward to the fourth one, deeded timeshare. So deed, I think you know that we are having a certain deed in the beginning, that what we will have in that particular timeshare, what facilities we would be able to avail. Okay, these type of deeded timeshare. No, this timeshare property actually is the concept of America. ठीक है, वहां से ही आया है. वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको timeshare properties बहुत ज्यादा मिलेगा. And this is a very new concept for India. मतलब बहुत न्यू तो नहीं बोलूंगा, मतलब we got into early 2000 this particular type of properties, and still we all industry people and the government of India are working on to that. Okay, so deed is like in the beginning of purchasing of the timeshare, you will have a certain deed that what particular things you would be able to use, what type of facilities would be given, all those things would be mentioned in that particular contract. That is called as deeded timeshare. उसे हम deeded timeshare बोलते हैं. Right to use, I have already told. जब अभी मैं आदित्य से बातें कर रहा था तो so right to use is something that before the timeshare has came into existence, we have decided that who all would be there. ठीक है, so you can say a kind of a partnership. ठीक है, might be you are having 5% of stake into share into that, or 4% of share into that. However, you would have a right to use contracts, so you can use it. ठीक है. हाँ, अब ये जो deeded और right to use है, उसमें कहीं ना कहीं आपका पहला दिन ही लगेगा, ये याद रखना. फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और रोटेशनल है, वही लगेगा. ठीक है, ये एक अलग तरह का है कि हम एक एक्स्ट्रा कुछ दे दिए उन्हें. ठीक है, डीडेड में हमने बोला कि आपको और फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि once you will go into timeshare properties, you cannot expect facilities like standard 5-star deluxe होता है. ठीक है, वैसे फैसिलिटीज नहीं होते, चाहे आपका मतलब टाइमशेयर में तो थोड़ा बहुत आजकल होने भी लगा है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडोमिनियम, सो मिनिमम फैसिलिटीज आपको मिलेंगे. ठीक है, तो मतलब अभी भी आप टाइमशेयर देख लो, देयर आर टाइमशेयर इन कुर्ग एज वेल. ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे तो देयर वुड बी वन रेस्टोरेंट. ठीक है, you would have to go over there, you have to have your buffet breakfast over there, buffet lunch over there, buffet dinner over there. ठीक है, I have already told meal plan. वो मील प्लान पे रख देते हैं, आपको मैप पे रख देते हैं, एपी पे रख देते हैं और बोलते हैं have this meal. ये नहीं कि you will have a la carte and you will say that no, I don't want to have a tomato soup, I wanted to have a French onion soup. No, you cannot. ठीक है, got the meaning? Got the meaning? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टाइमशेयर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है. ठीक है, in your examination what is being asked? It is being asked what is the difference between timeshare and condominiums. ठीक है, तो ये याद रखो, condominiums are also called as apartment hotels or apart hotels. They are having single ownership, whereas timeshare are having multiple ownership. Mostly timeshares are found in villa or resort kind of thing. ठीक है, इसमें एक सब टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, we'll study that thing. ठीक है, that is referral chain. Actually, I have already discussed it in the classroom. If you remember, on 27th of December, we have already discussed referral chain. So a referral chain जो होता है, तो उसमें उसका मीनिंग ये है कि referral chain is say for example, Neeraj is having a hotel in at his home place. Say for example, Ranchi. Abhishek is having in Netarhat, Kevin is having in Jhansi, Tej Pratap is having somewhere in New York, and Aditya is having somewhere in Oakland. Just an example. Now, a guest is there, say Vidya is there, and say there at Ranchi at Neeraj Hotel, and Neeraj in a 5-star deluxe hotel. Single unit. So she has asked Neeraj, I was mesmerized with the services you have provided to me. I'm going to Netherhat, and then I would be flying to Jhansi, and then I would be going to New York and then to Oakland. Can you suggest me the hotels? Now Neeraj is having, of course, his batchmates in all those places, and he is 100% sure that
they are able to give at par services which Neeraj has provided. Okay. So that is a referral chain. Okay. This is one kind of referral chain. In other words, say for example, each 5 people belong to different IHMs or different background. However, they came into contact from any of the medium, from say for example from social media, they came into contact, from LinkedIn they came into contact, and they decided that they would advertise their hotel, altogether. ठीक है ना, not in a joint venture, ऐसा मत समझना कि पार्टनरशिप है, there is no partnership at all. ठीक है, there is no partnership at all. ठीक है, they are just doing the marketing. So say for example they had a hotel website, a common hotel website on which you would be able to find out all these 5 hotels. ठीक है, इसे तुम मेक माई ट्रिप वगैरह मत समझ लेना. ठीक है, ये एक क्लोज्ड ग्रुप था और इन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया और उसमें 5 तरह के 5 अलग-अलग होटल्स दिखने लगे. They are called as referral chains. Referral chains. ठीक है, mostly the independent hotels comes together and makes chain hotels, referral chain hotels. Clear? So that's all about today's session. Timeshare and vacation ownership. I think you must have understand. If in case you would have any doubt, you can mail me as well. There's a time constant, that's why I'm saying. So thank you.